Bismillahirrahmanirrahim. Today we start physics class 10. Board is Khyber Pakhtunkhwa. We will first do numericals of this book. So we start from chapter 10 or unit 10, simple harmonic motion and waves. There are 7 numericals. We do it one by one. The first is a mass hung from a spring vibrates 15 times in 12 seconds. Here number of vibration is number of vibrations, which is denoted by 15, and time is given, time t is given 12 seconds. ठीक है, टाइम जो है वो 12 सेकेंड. फाइंड क्या करना है? 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी F. Second part, the period of the vibration, time period. Time period T. So we start. The formula is for frequency F is equal to N by T, and for time period T is equal to 1 by F. Time period is the reciprocal of frequency. Solution. First, we write formula F is equal to N by T. Now putting the values. Putting the values. F is equal to 15 divided by 12. So after division, 15 divided by 12, we get 1.25. And what is the units? What is the unit of frequency? Yes, hertz. Hertz. The next is time period. T is equal to 1 by F. 1, put the value of frequency 1.25. 1.25. 1 divided by 1.25. 1 divided by 1.25. Answer is 0.8. The unit of time period is second. So we have 2 answers. One is this, and the second is time period. Now we solve question 2. The question 2 is, a spring requires a force. Force is given. Force F is equal to 100 Newton. To compress it to a displacement of 4 centimeter,
displacement x is equal to 4 centimeter. We convert it into meter divided by 100. Now it is meter. 0.04 meter. What is its spring constant? To find a spring constant. Spring constant, which is shown by K. The formula used in this numerical is Hooke's law. F is equal to Kx. This is equation 1. Solution from equation 1. We write this equation for K. K is equal to F divided by X. The value of X is 100 and X is 0.04. Hundred divided by 0.04. 2500. Unit of spring constant, force Newton and displacement meter. This is our required answer. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. A second pendulum is a pendulum with a period of 2.0 seconds. Time period given है 2.0 seconds. How long must be a second pendulum on earth? पेंडुलम जो है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ज़मीन के ऊपर उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.8 है, तो हमने जी ई से शो किया है, और मून पे 1.62 मीटर पर सेकंड. अब हमें फाइंड करना है लेंथ on moon, length on moon, length on earth, length on moon, LM. इसके अलावा हमें टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी F. Frequency is reciprocal of time period. फिर हम लेंथ फाइंड करेंगे. F is equal to 1 by 2 pi under the root G by N. Solution F is equal to 1 by T. Putting the values, 1 divided by 2.0, 0.5 और ये
hertz. So frequency on moon and frequency on earth both will be 0.5 hertz. Now we will find the length using this formula. First, taking square of equation 2, f square is equal to 1 by 2 pi g by L under the root whole square. F square is equal to 1 by 4 pi square g by L. We shift L on left hand side because we want to find the length. L is equal to 1 by 4 pi square g, and this f square will go down, f square. Note, find the length of pendulum on earth. 1 by 4 pi square g on earth divided by frequency. Now we will put the values. 1 by 4 pi square, the value of g on earth is 9.81 and frequency is 0.5 square. .81 divided by 4 pi square multiply 0.5 square is equal to 9.87. Divide this value on that. 9.81 divided by 0.99 meter. The length of the pendulum on the earth will be 0.99 meter. The next is the length of the pendulum on moon. Length of pendulum on moon. Again we will use this formula. Length 1 by 4 pi square g on moon and f square. Length on moon. Now putting the values. 1 by 4 pi square, the value of g on moon is 1.62, frequency is 0.5 and square. Now, when we multiply these three values, we get 9.81
1.87, same as we got here. Now in numerator 1.62. So divide 1.62 divided by 9.87. We get 0.16 meter. The length of the pendulum on moon is 0.16 meter and on the earth is 0.99 meter. Now solve question 4. Calculate the period and frequency of the propeller on a plane if it completes 250 cycles in 5 seconds. Number of cycles. Number of cycles. N is equal to 250. Time. Five 0.0 second. To find frequency, F, and time period. T. Frequency can be found by the formula F is equal to N divided by T. Small t. And time period is the reciprocal of frequency. Solution. F is equal to N by T. पहले हम क्या करते हैं, N की जगह 250 पुट करेंगे और टाइम है 5, तो 5 5s are 25. 50 cycles per second. Frequency means cycles per second. The second part is time period. Divided by 50. Zero 0.02 seconds. This is our second answer, and this one is our first answer. Okay. Question 5. Water waves with wavelength 2.8 meter. Question 5. Wavelength given है. Wavelength. इसको हम लैम्डा से शो करते हैं. Wavelength को. ये है 2.8 मीटर. Speed V is equal to 3.80 meter per second. What is the frequency? To find my frequency. Frequency F. यहाँ जो फार्मूला यूज होगा
वो है v इज इक्वल टू f और ये लैम्डा। सोल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो f इज इक्वल टू, इसको हम रीअरेंज v डिवाइडेड बाय लैम्डा। v की वैल्यू है 3.80, वेवलेंथ है 2.8, frequency will be 3.80 divided by 2.8, 1.34 hertz. This is frequency. Question 6. Question number 6. The distance between two consecutive crusts in a series of water wave is 4.0 meter. ये wavelength किसे कहते हैं? The distance between two consecutive crusts. This is called wavelength. ये given है कि 4.0 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये wavelength lambda 4.0 meter, and the crust travels 9.0 meter in 4.5 सेकेंड। ये असल में स्पीड है, स्पीड जिसे हम v से स्टार्ट करते हैं, वो है 9.0 in 4.5 सेकेंड, 9.0 मीटर in 4.5 सेकेंड। 9 को 4.5 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी f। इसके लिए भी यही फार्मूला जो हम प्रीवियसली यूज़ कर चुके हैं, v इज इक्वल टू f लैम्डा। Solution from equation 1, frequency is equal to v by lambda. V is 2 and lambda is 4. 0.5 hertz. This is our required answer. ये 0.4 hertz. 0.4 hertz is the frequency of this wave. The last question is question 7. Data is given: a station broadcasts an AM radio waves whose frequency is, frequency of radio waves। तो F और Q के ये AM रेडियो वेव्स है तो इसके साथ हम AM लिख लेंगे। ये है 1230 10 raised to the power 3 hertz। And an FM radio waves, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है FM, वो है 991.0
9 multiplied 10 raised to the power 6 hertz. Find the distance between adjacent crust. यानी वेवलेंथ, एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो असल में वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करेंगे। इसके लिए फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे हमारे पास v भी नहीं, स्पीड ऑफ द दीज वेव्स, बट वी नो दैट रेडियो वेव्स मूव with the speed of light, and speed of light is speed of light. c को उससे हम c से भी शो कर सकते हैं, तो इसको हम c भी लिख सकते हैं या v, और वो है 3 multiplied 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन रीअरेंज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ, लैम्डा फॉर ए एम, तो v और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। लैम्डा ए एम इज इक्वल टू speed 3 multiplied 10 power 8 divided by frequency 1230 10 raised to the power 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 exponent 8 divided by 1230 exponent 3, ये आ जाता है 243.9, क्योंकि ये वेवलेंथ है और वेवलेंथ मीटर, इसका यूनिट। अगेन वी यूज़ दिस इक्वेशन, लेकिन अब लैम्डा हम फाइंड करेंगे एफएम के लिए, तो स्पीड तो वही रहेगी, रेडियो वेव्स की स्पीड कांस्टेंट है। एफ एम की जगह ए एम की जगह हम एफ एम लिखेंगे, एफ और एफ एम। पुटिंग द वैल्यूज 3 multiplied 10 power 8 divided by 9 1.9 10 raised to the power 6। देखते हैं इससे क्या आता है। 3 exponent 8 divided by 91.9 exponent 6, 3.26 मीटर। ये हमारे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस हैं। इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स में फिर मिलते हैं। ओके।